हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज गुड टू गो। पावर भी। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। एम आई ऑडिबल? आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ। लेट्स सी साउंड। इसको साउंड प्रोफाइल थोड़ा अच्छा कर देते हैं। अभी सही है। अभी सही ऑडिबल रहेगा अभी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी। कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग करेंगे असाइनमेंट नंबर 7। आज हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 7 का रिमेनिंग क्वेश्चन। सेवन का रिमेनिंग क्वेश्चंस और डाउट्स सेशन भी रहेगा, ठीक है? डाउट्स क्लियरिंग सेशन। डाउट्स क्लियरिंग सेशंस, ठीक है? ठीक। तो दिस इज द थिंग। तो किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम में डायरेक्टली, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड आई विल सॉर्ट इट आउट, ठीक है?
तो तब तक के लिए रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से हम लोग असाइनमेंट 7 में ही अटके हैं। सो वी विल बी डूइंग असाइनमेंट नंबर 7 कंप्लीट टुडे। और अभी शायद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है कि राइट अ क्वेरी टू प्रिंट द एम्प्लॉय नेम पॉइंट्स एंड कैशियर आईडी ऑफ द एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट ओवरऑल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सपोज़ हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और है एम्प्लॉय पॉइंट्स, ठीक है। सपोज़ अपने एक टेबल है, उस टेबल में 2 कॉलम्स है, एक एम्प्लॉय कॉलम है और एक एम्प्लॉय पॉइंट्स के कॉलम है, ठीक। और मैं यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एम्प्लॉय का मैं लूँगा 20 पॉइंट्स, सेकंड का मैं लूँगा 30, थर्ड का 50, फोर्थ का 70, फिफ्थ का 5, ठीक है। ए हाय सफ़ान, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कैसे हो आप? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ओके, तो बाय दैट टाइम हम लोग जहाँ क्वेश्चन में थे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डिटेल है प्लस एम्प्लॉय के पॉइंट्स का डिटेल है हमारे पास। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? उन्होंने सिंपल एक चीज़ पूछा है कि आपको एक क्वेरी लिखना है जहाँ पे कि एम्प्लॉय पॉइंट्स फिर कैशियर आईडी सब कुछ रहेगा ऑफ द एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट ओवरऑल पॉइंट्स। तो ये जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इधर, इसका मतलब होता है ओवरऑल। अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब रहता है ओवरऑल। तो अगर मैं आपसे पूछूँ एक क्वेश्चन कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो पॉइंट्स हैं, इसमें ओवरऑल हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स कौन सा है, तो आप कैसे चूज़ करोगे? सिंपल, आप बोलोगे कि मैं मैक्स यूज़ करूँगा फॉर द हाईएस्ट वन, फॉर द हाईएस्ट पॉइंट्स, एंड मिन यूज़ करूँगा फॉर द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट एम्प्लॉय पॉइंट्स, सिंपल। तो वी विल बी यूजिंग मैक्स। और जब आप मैक्स यूज़ करोगे ये सारे पॉइंट्स पे, तो आउटपुट क्या होगा? 70, ठीक है। आउटपुट होगा 70 फॉर द मैक्स एंड मिनिमम क्या होगा? 5 फॉर द मिनिमम पॉइंट्स। तो जब हम मैक्स और मिन किसी चीज़ में यूज़ करते हैं, सपोज हम कोई भी क्वेरी में मैक्स या मिन यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें ज़्यादातर सब क्वेरी के तौर पे यूज़ करते हैं। किस बेसिस पे यूज़ करते हैं? सब क्वेरी के बेसिस पे, ठीक है। सब क्वेरी के बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, सिंपल एज दैट, राइट। सब क्वेरी के बेसिस पे। तो हम लोग जो मैक्स और मिन अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इस पे हम लोग सब क्वेरी के बेसिस पे यूज़ करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैक्स पॉइंट्स है उसको यहाँ एक कॉलम बनाएंगे और इसको लिखेंगे जैसे 70 मैक्स पॉइंट्स है, ठीक है। तो मैं जब सब क्वेरी में लिखूंगा तब क्या होगा, जितने भी रोज़ हैं सारे रोज़ में 70 ऐसे शोकेस करेगा, ठीक है। सारे रोज़ में 70 शोकेस करने वाला है। और जब सारे रोज़ में 70 शोकेस करेगा तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हमारा टेबल शोकेस होगा आउटपुट में। और जब इस तरीके से टेबल शोकेस होगा तो हमारे पास क्या क्या डेटा रहेगा? एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय पॉइंट्स और मैक्स पॉइंट्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या, हम लोग एक क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं? जो एम्प्लॉय पॉइंट्स है और जो मैक्स पॉइंट्स है, दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, राइट। मतलब एम्प्लॉय पॉइंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे विथ मैक्स पॉइंट्स। व्हाट वी विल राइट, हुज हैवर पॉइंट, मतलब जिस किसी का एम्प्लॉय का पॉइंट मैक्स पॉइंट के बराबर है,
वो हमें आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो जिस एम्प्लॉय का पॉइंट्स मैक्स पॉइंट्स के बराबर रहेगा वो आउटपुट में, तो जो आउटपुट होगा उस आउटपुट में उस एम्प्लॉय के डिटेल्स शोकेस हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, बेसिक्स थिंग्स है, और बहुत ही इजी तरीका है इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने का, राइट। सो जस्ट राइट दिस। उससे पहले हम लोग एक चलते हैं यहाँ पे। असाइनमेंट 7 ऐसे लिख देते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन 1 में हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि हम किस टेबल से इसके आउटपुट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल, वी विल टेक दिस thing, oh sorry, not this table, we will take this thing, paste, and we will write select everything from this, and once we execute it हमारे पास सिंपल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट में क्या रहेगा हमारे पास, कैशियर आईडी, एम्प्लॉय पॉइंट, सुपरवाइजर आईडी एंड ऑल। बट हमें उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय पॉइंट्स का ज़रूरत है। और यहाँ पर वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें जो जो चीज़ का रिक्वायरमेंट दिया उस चीज़ का, तो एम्प्लॉय नेम का यूज़ है, तो एम्प्लॉय नेम हम लोग दे देंगे। एम्प्लॉय पॉइंट्स का यूज़ है और कैशियर आईडी का यूज़ है, ठीक है। तो ये चारों आई मीन ये 3 चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो सिंपल मैं उसको लिख लेता हूँ एक जगह, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉय पॉइंट्स लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा कैशियर आईडी, ठीक है। सिंपल। अब मैं और एक चीज़ क्या लिखने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कहा था मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सब क्वेरी। अब सब क्वेरी में क्या यूज़ करूँगा, सिलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट्स फ्रॉम फीडबैक टेबल, ठीक है। ऐसा मैं लिखूँगा और इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, ठीक। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या मिला आउटपुट में, मुझे मिला जो 3 कॉलम्स रिक्वायरमेंट है वो तो मुझे मिल गया, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय पॉइंट्स, कैशियर आईडी, प्लस मुझे मैक्स पॉइंट्स का भी डिटेल यहाँ पे मिल गया। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, एज एलियास दे दूंगा एज मैक्स मैक्स पॉइंट्स, ठीक। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अभी प्रॉपरली दिखेगा। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, जब हमारे पास तीनों रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स आ जाता है, जैसे पॉइंट्स का और मैक्सिमम पॉइंट्स का, हमें नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ कंपैरिजन करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है, दैट्स इट, ठीक। वी विल सिंपली डू द कंपैरिजन थिंग, ठीक है, नथिंग एल्स। सॉरी, कंपैरिजन किस चीज़ में करेंगे, कंपैरिजन हम 2 कॉलम्स पे करने वाले हैं, 2 कॉलम्स पे कंपैरिजन करेंगे, ठीक। पहला कॉलम क्या रहेगा, एम्प्लॉय पॉइंट्स, दूसरा कॉलम क्या रहेगा, मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, सिंपल एज दैट। अब देखो मैं यहाँ पे वही स्टेप अभी अपनाने वाला हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वेर एम्प्लॉय पॉइंट्स इक्वल टू दिस थिंग। आई होप चल जाए। हाँ, अब देखो, अब इस पे हमें क्या आउटपुट मिला है, जहाँ एम्प्लॉय पॉइंट्स इक्वल टू दिस। और अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे सिलेक्ट
एवरीथिंग फ्रॉम फीडबैक टेबल, और मैं मैनुअली चेक करूं कि कितने लोग हैं जिनके पास 150 पॉइंट्स है, तो मुझे सिर्फ एक ही आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है जिनके 150 पॉइंट्स है, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी टू ए। हाय जय, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर यू ऑल? तो यहाँ पर जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तब मैं मैनुअली भी देख पा रहा हूँ हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है जिनका एम्प्लॉय पॉइंट्स 150 है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे जब क्वेरी लिख के इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो भी हमें सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स या क्या क्या टॉपिक्स को कवर अप किया, लेट मी राइट इट हियर। तो टॉपिक्स कवर अप इन दिस क्वेश्चन, तो क्या क्या टॉपिक्स हमने क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चन शायद 5, या क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप किया। पहला टॉपिक है सब क्वेरी, सब क्वेरी कवर अप किया। दूसरा टॉपिक हमने कवर अप किया रिलेटेड टू वेयर क्लॉज। तीसरा टॉपिक हमने कवर अप किया सब क्वेरी इन वेयर क्लॉज, ठीक है। हमने ये तीन टॉपिक को कवर अप किया एक ही क्वेश्चन में, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द असाइनमेंट। तो आप अगर असाइनमेंट करोगे तो आपको बहुत इजीली बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे आई मीन टू से लॉजिक्स कवर अप हो जाएंगे। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस असाइनमेंट्स। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि प्लीज़ आप ये असाइनमेंट्स को करें और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं क्लियर इट आउट, राइट। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे, सो दैट्स द थिंग। एंड anybody, hey hi, Chand, welcome to live stream. Oops, sorry. Welcome to live stream. Bro, did we have recording video of previous topic of live stream? Yes, actually each and every topic, I mean each and every live stream is uploaded on a daily basis. No doubt it takes little bit of time to get uploaded from YouTube side, but there is no, I mean to say, editing or any part from my side. I just make the live stream, close it, and keep it public. So once it get uploaded, processed, and all those things are done, it will be visible to you all. Okay. So all the previous topic live stream are uploaded in my YouTube channel, so you can go and watch that. So by that time, anybody have any doubt in the live stream, they can ask their doubts. So anybody have any doubt in the live stream, they can uh, they can ask your doubts. So anybody have any doubt in the live stream?
Chan, thank you, bro. Yeah, welcome, bro. Welcome. No need to thanks. It's already uploaded. I'm here to clear your doubts, clear your issues. So please, anytime, join my live stream, ask your doubts. And if you are new here, there are lots of project in my YouTube channel. You can watch that and also use this project in your CV and resume. Actually, all the data sets, study material are available in this uh, description box of the videos and specific videos. And on 1st of December we will be launching our Power BI project. It is a basic project, so if you don't have any knowledge, like not only you, like anyone, those who don't even know what is Power BI, they can also understand that project very easily, because I have used basics of the basics things in that project. That will be uh, like visible to public on 1st of December. It is already uploaded, but I have kept it in a premiere section, I mean premiere section. So on 1st December 10 a.m. you will be able to see the Power BI project. So please do watch that and uh, give your feedback. So anybody have any doubt in the live stream, please ask your doubts. I am ready to help you out in this.
So anybody have any doubt in the live stream, please ask your doubts. Ask your doubts in the live stream. I'm ready to help you out. So anybody have any doubt in the live stream, just ask your doubts. So anybody have any doubt in the live stream, just ask your doubts. Here in the live stream, I will help you out in that. So anybody have any doubt in the live stream, just ask your doubts. So anybody have any doubts in the live stream, please ask your doubts in the live stream. I am ready to help you out in that. Okay. So by that time, let me show you something here. I was going through this thing. This data engineering work, okay? Everybody in the live stream, please have a focus on this. This is Apple's data engineering work. Actually, I was going through a LinkedIn post and I found out this thing, okay? What I found out is like, see, just see the number of time they have written SQL. Only they have written once Python once. Okay. I was going through LinkedIn and I have seen the LinkedIn post of Ankit Bansal. Uh, there he have written a post related to that. Like for data engineering post for Apple, engineering post for Apple, that too in India. What I can see is like most of the time, see, like Ankit has written a correct thing. See how many times they have written SQL, only SQL, this, that, SQL, CT, Windows function, whatever things I tell in my live stream, always these things are very much required. Let me tell you, they have written this Java things only once, and see how many times they have written SQL. This is preferred qualification. No need for worrying about this. But see, this is minimum qualification. That means this is actually required right now. Just see the number of times they have written SQL. So this is what I'm trying to say. Always stick to your basics. Basics tools means SQL. Earlier it was Excel, but in today's scenario it is SQL. So please stick to this SQL basics. And let me tell you one thing, you will get real success. Matlab data engineering, not even data analytics, data engineering post, they are showing this kind of thing. Share this role. Just a minute. Let me share this role in my YouTube channel, in my YouTube post, so that everybody, like anybody wants to apply on this, they can apply. Right.
ठीक है। Just see the number of times they have written SQL. Just stick to basics and chill. Source LinkedIn, ठीक है। Is it working? Yeah, it's working. Is it working properly? Yeah, it's working. So this is what I'm trying to say. See the number of times, matlab SQL is very, very, very much important for your data analytics world, your data engineering world, or data science world. Let me tell you that. ठीक, that's the thing. And see, everywhere they have written data cleansing, standardizing, matching. So data cleaning, data modification, data manipulation, all those works are also required, which I have already taught you in my projects. If you check my project like SQL project, Python project, you will see the project starting part is always about data cleaning, data modification, data manipulation. Each and everything are there in this. Okay, each and everything are there. So please make sure you take care of this thing, especially this modification, manipulation, taking care of the data quality and all. Okay, they've written data quality as well. These things, please take care of this. These are the only things which are required for your data analytics job profile, and this is the real truth, let me tell you. So that's the thing. Let's close these things and let's work on question number. Just a minute. Now let's work on question number. What question we have? So okay, what question we have right now? We have question number 6 right now. Okay, let's see what we have in this question number 6. Let's see and work in that. Hmm. So I was just going through the what's this? Let's work in that. Just a minute, let me check out this.
Okay. Yeah. So question number 6, let's move to question number 6 right now. Okay. So this is the final question of assignment number 7. Let's move to that question and let's work out in this. So what's the question in question number 6? We have to write a query to print product ID and total sales of highest selling product. Highest selling product in what sense? By number of units sold in each category. Okay. So that means there are a number of categories. Let me give you a glimpse like what the question is all about. Product ID, total sales of highest selling product by number of units sold. Selling product by number of units sold. Okay. So we have here category, product ID, quantity. ठीक है. Suppose it is all about category. Suppose we have category A, then we have category B. We have three products in category B. ठीक है. Then we have category C in this. Suppose in category A we have product ID, suppose P01, P02, then we have P03, P04, P05, P06. ठीक है. In category A, P01, suppose quantity sold is 20. Let me check once. And in this 20. ठीक है. For category B, we have 10, 10, 20 like this. For category C, we have 40. So in this, what they have asked, you have write a query to print the product ID, total sales of highest selling product. Highest selling product means see, that product which is highest sold is all about number of units sold. ठीक है. Means this product ID, whatever highest selling product it is all about, in that category you have to find. I mean to say, in category A, we have this 20, 20 as the highest selling product. ठीक है. In category B, we have this thing as the highest selling product. In category C, we have this thing as the highest selling product. So this is what they have told. You have to write a query to print product ID, total sales of highest selling product by number of units sold in each category. This is what we want to find out. We have to find out this category A का highest selling product, category B का highest selling product and category C का highest selling product. ठीक है. So these things will be available in which I mean to say which data sets. Let me find out that. So in question number 2 we have this questions can be found. I mean this question should be done with the help of this table. ठीक है. With the help of this table, because in this table we have the required data and the required column, that is not row ID, order ID, order date and all we have. So what we actually need, we actually need the product ID, category, and what we need, quantity. That's it. We need this three columns and that's more than enough. So we have product ID, category and quantity. Take these three things we actually need right now. Okay? Only these three things, nothing else. So in these three things, what we have to do? We have to
find out the highest product sold in each category. For that, we have to find out the sum of quantity in what group? Group by product ID category. We will do a group kind of thing. Means in product ID and category group, what we will do? We will be finding the total quantities of the product. If you want, we can do like this so that it is easy for you to understand. Okay, and I will write order by product ID descending. Right now, what we can see here? Right now, we can see the product ID with highest. Wait. With sum of quantity as let me write total quantity. So I will write here total quantity descending. Okay. So once we execute this, what we will find out? We can find out that some of the product are having this kind of quantity. Okay, quantity and their product ID. But right now we don't have any category for that. What we have to do? Either we can join these things with the table, with the 7-Eleven table, and find out the category for this product ID. We can do that as well. But let's see, once we do this, do we find out anything special here? I don't think so. We will find out anything special here. Category. Once we execute it, uh, let's check. Or we will join it. It is better to join, I would say. Hmm. 3832 is 75. Let's see, does 383275 is showing here or what? Then 1970. Oops, sorry, I just forgot the comma here. This, okay. Okay. Then this is also what we can use. So what we can do? We will do a trick here in order by thing. So order by, we will be doing total quantity. After that, we will be doing category. Okay. That's it. Nothing else. Category is this. And when we execute it, total quantity, or we can do, let me just do category, then total quantity descending. Hmm. Now it's good. That means in desk supply we got this thing. Then if we move to the next category, that is the sports good, we got this thing, and same for the study supplies as well. So we have find out all those things. Now what we will do, we will just connect, we will just connect the product ID of this table. We will give this alias. We will connect the product ID of this table with the main table, that is this one. Select everything from 7-Eleven store A, join T1 as B on A dot product ID equal to B dot product ID. Okay. Now we won't be doing much. We will be just writing
category, then max of total quantity with this group by category, and let's execute this. Let's see what output do we get. Category is this. Okay, no worries. We will write t1 dot category, then t1 dot category, because we have category in both the table, that's why. Hmm, alias b. Okay, it took this alias, right? No worries, no worries. It's b dot this, and when we execute it, okay, we have found out the max one. ठीक है, max मतलब sports good का max, then desk supply का max, study supply का max. For that we can do one more thing. Product id this, and a dot category equal to b dot category. ठीक है, like this also we can do, and we can write b dot product id. ठीक है, we can do like that as well, no worries for that. B dot product id, and when we execute it, you can check one thing. See, oops, sorry for that, not for the product id. Okay, what they have asked, product id, total sales of highest product. Hmm. Relation t1 does not exist, but why? We can check this thing. Right now it's working. Okay, we can do one thing. We can just write p dot, we can just write product category here, product id here, and then what we can do, we will join this thing, product id here. Do we get something? No. t1 as this. It is better to write category. And then let's execute it and let's see. Okay, for each category we find out the max sale. So right now we can do one thing. We can join this table, t2 table, t2 as this, with the main table and get the product id. It would be also a better thing right now. So we can write select everything from t2, join b on t2 dot, then b dot product id, t2 dot category equal to b dot category, and
t2 dot max equal to let's join t2 dot max equal to t1. Let me check one thing. T2 dot max equal to t1 dot total quantity. Can we do it? Let's check this out. Will we get the solution for this? Join t1 on this and let's execute it. No, it's not working. Okay, let's see. Can we get this output? Let's check that. No, not this as well. One criteria we found out the total quantity, and next criteria we found out the maximum. Okay. Right now we want the product ID as well. So I will join and t2 dot t2 dot max qty equal to let's take this t1. Let's take data from t1. T1 dot category, then t1 dot total quantity. Okay, right now we got the output. It is better to join the first and the second thing. Okay, so right now what we need the product ID. So t1 dot we can say t1 dot product ID. Then what we need the highest sales. So t1 dot total quantity. We got that as well. And apart from that we need t1 dot category. Okay, and let's see the final result for it. Okay, we got the final result right now. We got the product ID, we got the category, and we got the total quantity with the help of only three, I mean to say with the help of only three CTs. Okay, so on first CT we have found out the sum of quantity. In second CTE we find out the maximum of whatever sum we have find out. Okay, and
in third CT, we have found out the final output, that is related to product ID, category, and total quantity. So what things we have learned here? Let me what concepts we learn in this question number 6. We have learned the use of CT. ठीक है. Second, we have learned the use of aggregate function. Aggregate function. Then we have learned the use of what we have learned additional joining two columns. ठीक है. We have seen the use of joins in two columns. ठीक है. We have used two columns for joining. We have seen the use of city. How many city we have used? We have used three cities. ठीक. We have seen the use of aggregate function, that is max, and we have seen the use of joining two columns. So these are the three things which we have seen in this question, that is question number 6. So till that time, anybody have any doubt in the live stream can ask your doubts. I'm ready to help you out in this. Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. Anybody have any doubt in the live stream, they can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream, they can ask your doubts related to SQL, related to Python for data analytics, anything related to data analytics as well, you can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Anybody have any doubts in this? Please ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Please ask your doubts in the live stream.
So anybody have any doubts, please ask your doubts in the live stream. I'm ready to help you out in that. Anybody have any doubts in the live stream? They can ask your doubts. Anybody have any doubts in the live stream? Please ask your doubts in the live stream. Okay. By that time, let's move to assignment number 8 and let's see what questions we have in assignment number 8. Okay, let's move to that. Before that, let me just fill up my water bottle and come back in just 5 minutes.
So okay, let's start with the topic right now. So it's question number 1 of assignment 8. Hmm, let's see what things we have. So okay, so hmm, okay. So let's start with question number 1 of assignment 8. Assignment 8, question number 1. Let's start with that. So in assignment 8, what we have to write a query to print third highest points of employee detail of each cashier ID. Make sure you give preference to younger employee in case of a tie. Okay. So what we need, third highest points, third highest point with employee detail in each cashier ID, with employee detail in each cashier ID. Okay, understood. What we have to do right now is like, see, there are cashier IDs are there. Let me show you here. Cashier ID is there. Then we have sorry, points. Okay, we have employee name. Let's write employee, and then we have employee points. Okay, we have this thing, simple as that. What we have to do right now, for each cashier ID, suppose, okay, let's complete it fully. Suppose this is the cashier ID and this is employee 1, employee 2, employee 3, employee 4, employee 5. And we have employee points like 20, 10, 30,
2040. ठीक है. Right now what they have written कि write a query to print third highest point with employee detail in each cashier ID. So for each cashier ID, how many cashier ID are there? Right now in this table, we have two cashier IDs, that is cashier ID 1 and cashier ID 2. In this two cashier IDs, we have to find out the third highest point. Okay, third highest point, if I do this here, I find out that third highest, मतलब first, second, third. This is the first, this is the second, this is the third highest. ठीक है. ठीक, simple. Make sure you give preference to younger. Okay, younger employee, that's we will do it in the real question. Let's read this question. If the cashier ID is having less than 3 employee, then give us the first highest. That means for cashier ID 2, there are 2 employees. So 2 employees means what? Less than 3 employee. For less than 3 employee, we have to give the first highest, and if there are equal to or greater than 3 employees in any of the cashier ID, we have to give the third highest. ठीक है. So in this what we will be using? Simply we will be using यहाँ पे विंडोज फंक्शन. ठीक है. We will be using windows function here. We will be using windows function here, and in windows function what were the things we have to take care of? We have to take care of the cashier IDs. ठीक है. Because we will create window in each cashier ID. मतलब for cashier ID 1 we will create a window. ठीक है. First group या window. ठीक है. For second cashier ID we will create one more window. So this is a second group or window. ठीक है. So in each window we will do ranking or row number or dense rank, anything we will see out there in the real question. So for each window we will be doing some ranking part. So whenever you will be creating a group or creating a window, always make sure you use Windows function, because in Windows function you do partition kind of thing. You use partition kind of thing. Partition in what sense? Partition in sense of like suppose here we have cashier ID, or somewhere in the 7-Eleven store table you can do partition in case of category, or either you can do partition in case of subcategory. ठीक है. You will be doing partitions in this. मतलब this groups, मतलब whatever group, just a minute, whatever group we have for cashier ID, whatever group we have for category, whatever group we have for subcategory, we will create a window there and we will be doing ranking in this window. मतलब in each cashier ID we will be doing ranking, in each category we will be doing ranking, just like in a school. Just like in a school we have class. ठीक है. Like class 1 2 3. So this, if we go for ranking for class 1 class 2 class 3, it is all about windows function. So each and every class in a school is creating a window. ठीक है. And inside the class, like for class 1 there will be suppose 3 rank, like first second and third, like that. For class 2 there will be same 3 rank. For class 3 there will be same 3 ranks will be there. So in this way we can find out the output for each windows. ठीक है.
That's the thing, simple as that. ठीक. We will be doing the same thing here, but for now, for this question, we will be taking care of the cashier ID. ठीक है, simple as that. So what we have to do in this, let's first take care of the table. First, let's write assignment number 8, then we will move forward with the question. We will write assignment number 8. Then we'll move with the question. ठीक है, let's move with the question. So question number 1, we have the this cashier ID and all. In which table we will get the cashier ID thing? We will get all those things from feedback table. ठीक है, so select everything from feedback table and we will execute it. ठीक, once we execute it, you can see we have this windows for cashier ID 1, then same window for cashier ID 2, same window for cashier ID 3, although we have only one employee in cashier ID 3, but still for cashier ID 3 it will be just one employee का window. ठीक है, same goes for cashier ID 5. In this we will be creating a windows function with this. We will be giving row number for that. ठीक है, we will be giving row number doing over partition by cashier ID, order by employee points in what descending format, and let's execute it. Let's see what we have got. We have received employee name, cashier ID, employee point, supervisor ID, employee age, and row number. Row number is nothing but positioning in descending order of the employee points. It is better to write the columns that we actually need. We need employee name, then we need employee points, then we need age, also we need age. Sorry, and then we have row number with us. So when we execute it, okay, right now it is better, it's look good. It is not, and like no hodgepodge is there, it is like simple 4 column ka table is there in front of you. So it is like employee name, employee points, employee age, and row number, because we have to work in these three things and these things as well. So right now what they have given, make sure you give preference to younger employee in case of a tie. So how to know that there is a tie? We can just give rank and then you execute it. When you execute it, you see where there is a tie, you will see the same ranking for this. ठीक है, so where there is a tie, we want the younger employee the first preference. ठीक है, so younger employee will be kept on the first priority. For that we will take row number, because we need the real ranking right now, over partition by cashier ID, order by employee points descending, and where there is same points we will write employee age as the first priority, so ascending. ठीक है, and then we will execute it. Now see, we can see the
38 age is on the second rank and 40 is on the third rank. So we have got the output here. Simple as that. Better to give roll number, we write फाइनल रैंक. ठीक है, बेटर एज रैंक. ठीक है, चलेगा. लेट्स वर्क आउट इन दिस. अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस पे हम लोग फर्स्ट क्राइटेरिया तो कवर अप कर दिए कि अगर दो एम्प्लॉयज़ के बीच में सेम एम्प्लॉय पॉइंट्स रहता है, तो सेम एम्प्लॉय पॉइंट्स वालों में से जो यंगर एम्प्लॉय होगा उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और जो एल्डर एम्प्लॉय होगा उसको सेकंड. तो हमने उसको फाइनल रैंक पे सॉर्ट आउट कर दिया. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पे दूसरा कंडीशन देखेंगे. दूसरा कंडीशन क्या है, अगर उस कैशियर आईडी में लेस देन 3 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से हम लोग फर्स्ट हाईएस्ट को लेंगे. तो पहले देखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो इसको मैं फर्स्ट थिंग एक टेबल बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें तो पहला कंडीशन कवर अप हो गया. पहला कंडीशन क्या है, एज और थर्ड रैंक का. अब दूसरा कंडीशन हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ठीक है, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट कैशियर आईडी काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी as employee count from फीडबैक टेबल ग्रुप बाय कर देंगे कैशियर आईडी के साथ. ठीक है, कैशियर आईडी के साथ ग्रुप बाय कर दिए. अब जब इसको हम लोग अब क्या हो गया, अच्छा, जब इसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, हमें हर कैशियर आईडी का यहाँ पे आउटपुट मिल गया. ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे T2 एज दिस, मतलब एक CT दे देते हैं, टेबल नंबर 2. ठीक है, अब हम लोग सबको एक साथ मर्ज करेंगे. कैसे, सिंपल, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम T1 कॉमा T2, सिंपल एज दैट. हमने सबको मर्ज किया और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया. ठीक है, कैसे, ओके, आउटपुट आ गया. अब मैं इसको कर देता हूँ ऑर्डर बाय कैशियर आईडी, नहीं तो एक जम्बल्ड वे में रहेगा तो हमें ही बाद में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ कैशियर, ओके, D1 का ऐसा हो गया 3. ओके, हम लोग ज्वाइन करते हैं, बेटर रहेगा. बेटर टू ज्वाइन, नहीं तो क्रॉस ज्वाइन हो गया इसमें. T1 ज्वाइन T2 ऑन T1 डॉट कैशियर आईडी इक्वल टू T2 डॉट कैशियर आईडी. ठीक है, अब सही आएगा इसमें. हम जब इसको, अब क्या हो गया, कैशियर सही तो है, T2 डॉट कैशियर आईडी. सब सही है, कुछ इशू तो नहीं है. T1 कैशियर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों भाई. ओके, कोई बात नहीं, कैशियर आईडी लिख देते हैं. अब शो केस करेगा, नो नीड टू वरी अबाउट. ओके, यहाँ कॉमा. ए हाय जे, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. हाय जे, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम. हाँ, अब सही है. अब देखो, हर कैशियर आईडी के लिए एम्प्लॉय काउंट्स हमारे पास आ गया है. अब जब हमारे पास एम्प्लॉय काउंट्स आ गया है प्लस फाइनल रैंक आ चुका है, तो हम इजीली अभी इस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
इसको जे सर, ये क्वेश्चन कहाँ पे है? असाइनमेंट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज ऑन असाइनमेंट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, राइट? मैं लिख देता हूँ। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन 1, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये तो है सामने ही, असाइनमेंट 8 क्वेश्चन 1। अभी हम लोग असाइनमेंट 8 में पहुँच गए हैं, इसीलिए। हाँ, इसका तो अभी 1 आवर हो गया है पावर बीआई में, तो मैं आंसर लिख देता हूँ। करेक्ट आंसर 2 टेबल्स, ठीक है, जिसमें 73% करेक्ट आंसर है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक वेर क्लॉज लगा देंगे। वेर वेर क्या क्राइटेरिया दिया है? वेर एम्प्लॉय काउंट इक्वल टू 3 एंड फाइनल रैंक इक्वल टू 3, ठीक है? ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? और एम्प्लॉय काउंट लेस देन 3, ठीक है? इक्वल टू 3 नहीं, लेस देन 3 एंड फाइनल रैंक इक्वल टू 1। ये क्राइटेरिया इसमें जैसे दिया हुआ है, इफ कैशियर आईडी इज हैविंग लेस देन 3 एम्प्लॉय देन गिव द हाईएस्ट रैंक कैशियर आईडी, ठीक है? मतलब जहाँ पे एम्प्लॉय काउंट लेस देन 3 है जिस कैशियर आईडी में, वहाँ पे फाइनल रैंक आप 1 दे दो, और बाकी जो नॉर्मल है वहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दे देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक, अब देखो आउटपुट यहाँ पे इजी। एम्प्लॉय काउंट क्या है? 1, फाइनल रैंक 1, एम्प्लॉय काउंट 4, फाइनल रैंक 3, ठीक है? इसको हम लोग एक क्लीन वे में लिखते हैं। क्या क्या क्लीन वे इसमें दिया हुआ है? एम्प्लॉय डिटेल्स, तो एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या आएगा? एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, देन कैशियर आईडी आ जाएगा, देन एम्प्लॉय पॉइंट्स आ जाएगा, उसके बाद फाइनल रैंक आ जाएगा, देन एम्प्लॉय काउंट्स आ जाएगा, ठीक है? सिंपल एज दैट। अब इसको हम लोग कर देंगे एग्जीक्यूट। कैशियर आईडी इज एम्बिगुअस, दे दो इसमें T1। सब तो सेम ही है कैशियर आईडी सब में। अब ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय नेम, अब इसको एक प्रॉपर ऑर्डर बाय भी कर देते हैं, ऑर्डर बाय कैशियर आईडी प्रॉपर रहे, ठीक है? प्रॉपर रहेगा। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमने देखा कैशियर आईडी 1, ठीक है? उसमें कितने एम्प्लॉय काउंट्स है? 4, फाइनल रैंक 3, क्योंकि मोर देन 3 एम्प्लॉय काउंट्स है, ठीक है? एम कैशियर आईडी 2, उसमें एम्प्लॉय काउंट कितना है? 4, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन 3, तो फाइनल रैंक भी आपको थर्ड फाइंड आउट करना है। कैशियर आईडी 3 में एम्प्लॉय काउंट 1 है, तो फाइनल रैंक 1 होगा। सेम फॉर एम्प्लॉय काउंट 1, वी हैव फाइनल रैंक 1, ठीक है? सिंपल एज दैट। जस्ट अ मिनट, आई हैव रिसीव्ड अ message from, okay, just a minute, let me just carry on with the client work। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? जस्ट लेट मी कैरी ऑन विद द क्लाइंट वर्क, ठीक है? तब तक आप लोग यू कैरी ऑन विद दिस, ठीक?